So next time in any situation, don't delay treatment because every second matters. जब तक अगर मेरे पास एम्बुलेंस नहीं आती है एंड देयर इज अ टाइम कि हॉस्पिटल नियर बाय नहीं है, मुझे कॉल आउट करने में टाइम लग रहा है, एम्बुलेंस का आने में लेट हो रही है, तो व्हाट द अनदर पर्सन हु इज नेबर टू इट, what he or she should do? Chest tightness or a crushing kind of chest pain or a chest heaviness is kind of a pain which typically is observed in a acute coronary syndrome, means heart attack. CPR can be given by any lay person. ह्या वायटल्स वरून पेशंटचं वर्गीकरण केलं जातं आणि मग हा पेशंट रेड, येलो किंवा ग्रीन कॅटेगरी झोनमध्ये इमर्जन्सी डिपार्टमेंटमध्ये घेतलं जातं. स्मार्ट ॲम्ब्युलन्स और व्हॉट वी कॉल्ड एज 5G enabled ambulance, this is basically is a hospital on wheels. Hey everyone, this is your Gunjan and you are listening to Health 360 with Apollo Pune. Welcome back to another episode of Health Podcast series. So in life we usually plan for everything. करियर हो गया, लाइफ हो गई, उसके बाद ट्रेवल हो गया, डेली रूटीन हो गया, बट वेरी फ्यू ऑफ अस प्लान फॉर रियल टाइम इमरजेंसीज, सिचुएशंस लाइक हार्ट स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक्स, उसके बाद हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक अवेयरनेस. बट इनमें अगर हम थोड़ा सा भी प्लान कर लें और थोड़ा सा इनके बारे में सीख लें तो वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन दीज. So on a very special day of Emergency Medicine Day on 27th May, we have a very special guest with me, Dr. Sujay Patil, Head of Emergency Department. Welcome, sir. Namaste Gunjan. Namaste everyone. Myself, Dr. Sujay Patil. I'm a senior consultant and head of the Department of Emergency Medicine Specialty. With vast, almost 14 years of experience in emergency medicine, I'm at Apollo Pune. So, sir, let's start with very basic. What is emergency medicine and how a Department of Emergency function inside an hospital? Okay, nice question, Gunjan. What emergency medicine looks to the outsider? म्हणजे बाहेरून बघताना असं वाटतं की इमर्जन्सी डिपार्टमेंटमध्ये टू मच ऑफ अ केओटिक और कॉम्प्लेक्स सिच्युएशन, मेनी पीपल टॉकिंग, दे आर कमिंग, दे आर गोइंग. बट व्हेन इट्स कम्स टू इमर्जन्सी डिपार्टमेंट, इट्स अ 24 hours, all 7 days of week and all 365 days working department. For outsider, it might look as a complex, but we work with trained emergency physicians, doctors, nurses, paramedics, specialists, and super specialists to treat that critical patient where life is important to save our lives. Okay. So emergency medicine department is divided in different zones. When we talk about a red zone, which is also called as a resuscitation zone, like patients who are in cardiac arrest, ज्यांचं हार्ट हृदय बंद पडलेलं आहे, पेशंट जे स्ट्रोकचे पेशंट्स आहेत, these patients are categorized in red category, who takes priority when other emergencies come. So the next zone, which we call it as is yellow zone, which is called as a acute care area. So the patient who comes with fractures, a minor trauma, accidents, those are being taken and wheeled in yellow category. And the green category patients, who are relatively much more stable patients, who oftenly takes treatment on OPD basis, and if their vital stabilizes, they go home. So emergency department has these different zones, including a isolation area where we take patients like tuberculosis, COVID, and it has a minor operation theater also, where we can do small surgical procedures in the emergency department. Okay. So as we observing on 27th May, that Emergency Medicine Day. So why it is on 27th May? Yeah. So basically in 27th May in 2018-19, a group of emergency medicine specialists across European societies and British societies, they come together and they formulated a path and a process for amalgamation of emergency medicine specialists across globe, and they found a SOP. So it has formulated in London. So from that year in 1819, we started celebrating 27th May as a World Emergency Medicine Day, where all emergency medicine specialists can come together, and for the society benefit and awareness, we can have Emergency Medicine Day celebrated. So sir, as we observing this day on 27th May, so there must be some theme regarding this? Yeah, absolutely. So this year, 2026, May 27th, we have a theme called as Safe Space for Emergency Medicine Team. So for this theme, what we are actually looking is to reduce the burnout in emergency medicine specialists,
to have better outcomes for patient care and have a effective emergency medicine globally. Okay. So, sir, there are many types of emergencies as we see along in our life. बहुत प्रकार के होते हैं, हीट होता है, हार्ट अटैक होता है, स्ट्रोक होता है. So, what are the types of emergencies we are treating in our hospital? So when it comes to emergencies, according to different specialties, we do have a different emergencies. Okay. It could be cardiac, which we call as a cardiac attack, okay, which we call it as a myocardial infarction, a neurological outcomes, maybe a strokes. We do have a gynec emergencies. Okay. We do have a orthopedic and surgical emergencies. So related to that, we do cater all sort of emergencies as our unit. So these emergencies, when they are coming to the emergency medicine, so according to emergency patients' signs and symptoms, we have to have a different process flows and pathways, which we are effectively running to mitigate these situations. Okay. सर, जैसे कि अभी आपने बोला कि अलग अलग पार्ट ऑफ इमरजेंसीज वी केटर, ठीक है. सो अब एक साथ आपके पास अगर 4-5 लोग आते हैं या पेशेंट्स आते हैं अलग अलग सिचुएशंस के साथ, कोई ऑर्थो के साथ आ रहा है, कोई न्यूरो के साथ आ रहा है, स्ट्रोक का आपके पास अलग अलग पेशेंट्स आ रहे हैं, तो व्हाट इज योर थॉट कि मुझे किस पेशेंट को पहले देखना है? क्योंकि इमरजेंसी में एवरीबडी इज कमिंग इन इमरजेंसी, तो देयर मस्ट बी समथिंग कि आपके पास पहला कौन सा पेशेंट आपको लेना पड़ेगा या किस पे आप ट्रीट करेंगे पहले? Right. What? It's not like a first patient comes to the department has to be treated first. अच्छा, okay. It's not like first come first serve basis. Okay. It's basically whenever a patient comes to emergency, what we do is a triaging. So triage is a French word. What we do in triaging, we cater and we distribute. आपण पेशंटचं वर्गीकरण करतो. So the sickest patient gets priority. A patient who is coming with heart attack or a stroke symptoms, that will be treated first compared to a fracture patient or maybe a minor cut or maybe any abrasions on the face or any other areas. Okay. So a trained emergency technician or nurse within minutes, within 1 or 2 minutes, they take patient's clinical vitals, म्हणजे पेशंटचं हार्ट रेट असू दे, बीपी असू दे, पेशंटचे शुगर लेवल्स असू देत, पेशंटचे न्यूरोलॉजिकल स्टेटस असू दे, ह्या व्हायटल्सवरून पेशंटचं वर्गीकरण केलं जातं आणि मग हा पेशंट रेड, येलो किंवा ग्रीन कॅटेगरी झोनमध्ये इमर्जन्सी डिपार्टमेंटमध्ये घेतलं जातं. हे का महत्त्वाचं आहे? कारण की पेशंटचं ज्या सिच्युएशनमध्ये, क्रिटिकल सिच्युएशनमध्ये पेशंट पोहोचलेला आहे, त्यांना आपल्याला लवकरात लवकर रिसोर्सेस अवेलेबल करून देता येईल आणि ती ट्रीटमेंट लवकरात लवकर चालू होऊन जाईल. एकदा ट्रायल झाल्यानंतर ना नेक्स्ट द डॉक्टर स्टार्ट्स द पेशंट्स क्लिनिकल असेसमेंट. हे क्लिनिकल असेसमेंट फार लवकरात लवकर करावं लागतं. किती वेळा तरी इमर्जन्सी मेडिसिन डिपार्टमेंटमध्ये ज्यावेळी पेशंट येतात त्यावेळी ते त्यांच्याबरोबर जे अकंपनिंग रिलेटिव्ह असतात त्यांच्याकडे पेशंटची हिस्ट्री नसते, पेशंटची फाईल्स अवेलेबल नसतात, पेशंट कोणकोणते मेडिसिन्स खात आहेत, कोणकोणते आजार आहेत त्यांना हे त्यांना अजिबात माहीत नसतं. असंही होऊ शकतं पेशंटचे रिलेटिव्ह ज्यावेळी येतात इमर्जन्सी डिपार्टमेंटमध्ये ते एवढे पॅनिक असतात किंवा कन्फ्यूज असतात त्यावेळी त्यांना सुचत नाही की आपण डॉक्टरांशी आपण काय शेअर करावं आणि काय नको करायला. तर अशा सिच्युएशनमध्ये प्रिसिजन अँड किती लवकरात लवकर ट्रीटमेंट चालू करता येईल इमर्जन्सी डिपार्टमेंट हे कम्प्लिटली एक्सपिरियन्स आणि स्किलवरती अवलंबून असतं. म्हणून इमर्जन्सी मेडिसिन डिपार्टमेंटमध्ये ज्यावेळी इमर्जन्सीज कॉम्प्लेक्सिटीज येतात त्यावेळी प्रिसिजन फार महत्वाचं आहे. Sir, there is a phrase that everybody is knowing or listening to, that is every second matters. What is all about? Yeah, every second matters means it's a golden hour treatment. Okay. Once the patient has initiation of symptoms or signs, पेशंटला ज्यावेळी त्रास व्हायला चालू होतो तो सुरुवातीचे 60 मिनिटं आपण हे गोल्डन टाइम किंवा गोल्डन आवर म्हणतो, ज्याच्यात लवकरात लवकर ट्रीटमेंट ही चालू करायला हवी आणि लवकरात लवकर ट्रीटमेंट मिळाली ह्याचाच अर्थ पेशंटच्या डिसॅबिलिटीज आणि पेशंटच्या कॉम्प्लेक्सिटीज इन्क्लुडिंग त्यांची डेथ असू देत किंवा त्यांचं केअर असू दे हे इम्प्रूव्हाइज करता येईल आणि डेथ प्रिव्हेंट करता येतील. तर गोल्डन आवर मध्ये फॉर एक्झाम्पल आपण हार्ट अटॅक बोलूयात. ठीक आहे. हार्ट अटॅक म्हणजे काय? ज्यावेळी एखादी रक्ताची गुठळी रक्ताच्या व्हेसल्समध्ये हार्टला सप्लाय करणाऱ्या व्हेसल्समध्ये ज्यावेळी चोकअप होतं त्यावेळी एव्हरी सेकंद आपण जर ट्रीटमेंट डिले केली तर प्रत्येक मिनिटाला हार्ट मसल्स
डेथ होते. अच्छा. सेम ज्यावेळी आपण स्ट्रोक बद्दल बोलतो, वेन वी टॉक अबाउट स्ट्रोक, इट्स एव्हरी सेकंड 1.8 मिलियन न्यूरॉन्स म्हणजे ब्रेन सेल्सची डेथ होते. हो. तर लवकरात लवकर ट्रीटमेंट मिळणं फार गरजेचं आहे आणि त्याच्यासाठी सेकंद हा फार महत्वाचा आहे. आणि हा सेकंद हा पेशंट हॉस्पिटलला पोहोचल्यानंतर महत्वाच्या पेक्षा त्याला त्याचे बायस्टँडर्स असू देत किंवा रिलेटिव्ह असू देत किती लवकरात लवकर रेकग्नाइज करतात आणि हॉस्पिटलमध्ये पेशंटला व्हील इन करतात, त्याच्यावरती ही ट्रीटमेंट फार अतिशय महत्वाची आहे. सर, जैसे आपने मुझे बताया कि अलग अलग प्रकार की इमरजेंसीज होती हैं, लाइक स्ट्रोक इमरजेंसीज, हार्ट अटैक इमरजेंसीज. तो जैसे मैंने अभी रिसेंटली आई हैवन हर्ड अबाउट स्ट्रोक. तो सम पीपल डोंट नो व्हाट इज स्ट्रोक एंड व्हाट आर द साइंस ऑफ स्ट्रोक. तो हाउ डू पीपल आइडेंटिफाई कि इज दिस अ स्ट्रोक और ये स्ट्रोक नहीं है, कैसे समझे? अगर स्ट्रोक है तो व्हाट दे इमीडिएटली डू? राइट. सो स्ट्रोक मीन्स पैरालिसिस विच वी कॉल एज अ लखवा, ठीक है, इन हिंदी मराठी also. Okay. But stroke is secondly called as a brain attack also. Okay. So as every second matter, on every second millions of neurons means brain cells are dying. ठीक. The stroke typically when a bystander or a relatives looks as a symptoms, so they can have a various symptoms. Okay. A simple mnemonic called B fast, BEFAST can be memorized. Okay. So B stands for first word as a balance. Okay. Patient might lose his balance, otherwise while walking they can lose their balance or they can sway. That is a B balance. E is for eye. So patient might look a double vision or no vision also. Okay. So it could be a symptoms. Next mnemonic word is F. So face, one side of the face it might droops compared to second, means while smiling or something you will get a completely good working of face structure, but another side of the face or something is not reacting. So it doesn't have a smile. So A, next word, stands for arms. So any one side of the body or hand or something, when we are asking to raise a hand or something, the patient is not able to raise. Okay. So compared to other body or something, that hand body power is less. अच्छा, मतलब उठा ही नहीं पाता. उठा ही नहीं पा रहा है. हाथ भी हो सकते हैं, पैर भी हो सकते हैं. सो वो उठाने की कोशिश कर रही है, बट उनका वीकनेस होने की वजह से पैर गिर रहा है. तो ये हो गए आर्म. S stands for speech. Now while talking or something, they are not making a good sentences, otherwise they are not able to finish their sentences, otherwise they are sluttering. Okay. It can have a difficult discussion. And T, again T is time is brain. So as earlier we call an ambulance and we shift this patient to a nearby stroke ready hospital where we can do a brain imaging and we can able to know which kind of stroke is it, and so if clot buster injection is required we can administer. So this is a B fast mnemonic to identification of a stroke symptoms. Okay. If a person get to identify कि हाँ इस person को stroke के symptoms हैं, B fast में जो mnemonic है उसमें से कुछ तो match कर रहा है, तो what he or she should do at first? जब तक अगर मेरे पास एम्बुलेंस नहीं आती है एंड देयर इज अ टाइम कि हॉस्पिटल नियर बाय नहीं है, मुझे कॉल आउट करने में टाइम लग रहा है, एम्बुलेंस का आने में लेट हो रही है, तो व्हाट द अनदर पर्सन हु इज नेबर टू हिट, व्हाट ही और शी शुड डू? राइट. सो वंस द रिलेटिव्स आइडेंटिफाइज, नहीं तो उनको लगता है कि पेशेंट को स्ट्रोक के जैसे सिम्टम्स हो रहे हैं, सो फर्स्ट थिंग टू बी अ काम, ठीक है, एंड कॉल अ एक्सपर्ट एम्बुलेंस सर्विसेज टू अ नियर बाय स्ट्रोक रेडी एम्बुलेंस. व्हाट वी कैन डू इज किया बा, रादर देन, हमने बहुत टाइम देखा होगा कुछ लोग वो माउथ में दे चम्मच दे देते हैं, कुछ सूंघाते हैं. सो रादर देन डूइंग दैट और समथिंग, यू जस्ट हैव टू लाई डाउन द पेशेंट फर्स्ट. सो मेक श्योर वो कौन से सिचुएशन में है, वो पूरा आजू बाजू का सराउंडिंग पूरा सेफ है. मेक श्योर कि इलेक्ट्रिकल वायर्स, पानी वगैरह नहीं हुआ है, वो बाथरूम में गिरे, उनको बाहर लेकर आ जाइए. ठीक है, उनको कंप्लीटली रिकवरी पोजीशन में लेफ्ट लैटरल नहीं तो राइट लैटरल पोजीशन में दे दे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस में पेशेंट को सीजर्स मींस मिर्गी आ सकती है. अच्छा, तो मिर्गी के टाइम पे ऐसा हो सकता है कि उनकी सांस अटक जाए. ठीक है, तो उसके बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको लेफ्ट लैटरल नहीं तो राइट लैटरल पोजीशन दे दे. आपके क्लोज बहुत टाइट है पेशेंट्स के, तो आप लूजन कर सकते हैं. बेल्ट है वो लूज कर सकते हैं. ठीक है, एंड सपोजिटली पेशेंट को बहुत सांस की दिक्कत हो रही है, पेशेंट को जी घबरा रहा है, मेक देम कम and wait for a expert person to come.
इस सिचुएशन में मैं किसी को भी मुंह में कुछ देने की नहीं तो कुछ गोलियां देने की एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि स्ट्रोक दो टाइप के रह सकते हैं, एक क्लॉट वाले और दूसरे हिमरेज मींस हिमरेजिक। तो उस सिचुएशन में ब्लड थिनर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ओके, तो मतलब दे ऐसा कुछ है नहीं कि बस वी जस्ट हैव टू काम दैट पेशेंट और दैट पर्टिकुलर पर्सन, राइट। सर जैसे कि आपने हीट स्ट्रोक के मतलब मुझे स्ट्रोक के बारे में बताया, वैसे ही हार्ट अटैक्स में होता है। मोस्टली पीपल यूजुअली गेट कंफ्यूज कि एसिडिटी हो रही है, खूब ज्यादा एसिडिटी लग रही है पेट में, तो दे गेट कंफ्यूज कि अरे दे डोंट सी इट एज एन हार्ट अटैक का ये सिम्टम हो सकता है। तो कैसे लोग समझें कि ये हार्ट अटैक का सिम्टम्स है या व्हाट कैन लीड टू हार्ट अटैक? राइट। So most common myth is in a common lay person is कि अब they feel कि अब मुझे जो chest pain हो रहा है वो mostly is burping or acidity. हाँ, definitely. I have seen many patients who are just sitting at home taking antacids, thinking कि अब I have taken antacid, I'll wait for some times and then the heat symptom, the chest pain symptoms will go. But ऐसे नहीं है. So अभी बोलने के लिए अपन बोल सकते हैं कि what different red flag signs are there for acute coronary syndromes in a heart attack. So a chest tightness or a crushing kind of chest pain or a chest heaviness is kind of a pain which typically is observed in a acute coronary syndrome means heart attacks. Okay. This chest pain can go to a left hand of the hand or maybe both hands, maybe a front of chest or even on the jaw. Okay, and can refer to a back of the chest also. It many times do have sweating like some symptoms. बहुत बार relatives बोलते हैं कि patient बहुत sweat कर रहा था, बोल रहे थे uneasy लग रहा था, ठीक है, जी घबर रहा था। कई बार सुना है कि पसीना बहुत ज्यादा आता है, right? तो it is also a symptom. It is a uneasiness like having a doom or fainting kind of symptoms. ये भी हम बोल सकते हैं chest pain है। और इसके साथ सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जी घबर हो रहा है, और यूजुअली चेस्ट पेन सिम्टम्स एक्सर्शन के बाद आ रहा है, इट मींस इट्स मोर ऑफ अ कार्डियक इमरजेंसीज रादर देन अदर कॉजेस. सो अनलेस प्रूवन अदरवाइज, always these kind of chest pains, take it and go to nearby emergency specialty where the acute treatment can be started. Okay, if the person, जैसे मैंने आपसे स्ट्रोक में पूछा कि अगर कोई नियर बाय पर्सन है जिसको हार्ट अटैक आ रहा है और उसके बाजू में कोई है, तो what he or she should do in this heart attack situation also? So what is, whenever we talk about heart attack, it's always because of the choke up. ठीक है? So we have the pipes which are supplying to the heart muscles. Okay, there are 3 major vessels. उसमें कोई भी choke up हो गया तो हार्ट अटैक आने वाला है. ठीक है, बट इस हार्ट अटैक में पेशेंट घर पे है और रिलेटिव्स को पता चल रहा है कि उनको चेस्ट पेन हो रहा है, जी घबरा रहा है, एक्सर्शन के बाद चेस्ट पेन बढ़ रहा है, स्वेटिंग हो रहा है, पेन रेफर हो रहा है, तो आपके घर पे आपके फर्स्ट एड किट में एक सिंपल मेडिकेशन आप एक पूरा पैक बना के रखिए. उसमें एक डिस्प्रिन 325 mg टैबलेट, क्लोपिडोग्रिल के 4 टैबलेट्स और अटोरवास्टैटिन के 2 टैबलेट्स. आई अगेन रिपीट इट अगेन, डिस्प्रिन 325 का 1 टैबलेट, ठीक है, 4 tablets of clopidogrel and 2 tablets of atorvastatin. What they actually work after chewing म्हणजे पेशंटला तुम्ही सांगा की ते तोंडात घ्या आणि चावा. Once we crush these tablets na, so it will try to lyse that clot and it will increase the chances of reperfusion supply of the blood. Okay, and once it is been, after giving tablets, okay, you can ask the patient relative to calm, ठीक है, loosen their clothes and call a nearby ambulance so that the ambulance can reach faster and the paramedic will come here. They will perform a ECG and after doing a ECG they will know whether this is a heart attack or not. अच्छा, ओके, सो बेसिकली आपने 3 मेडिसिन के नाम लिए, उसमें से मोस्ट प्रोबेबली हर इंसान के जो नियर बाय घर में होते हैं वो तो कम से कम डिस्प्रिन तो होती है. तो अगर मेरे पास 2 बाकी की मेडिसिन नहीं है, तो क्या मैं डिस्प्रिन से काम चला सकती हूँ? वो भी वही काम करेगी क्या? नहीं, उस सिचुएशन पे डिस्प्रिन 1 टैबलेट पक्का ले लीजिए, बट 2 या 3 टैबलेट्स लेके बाकी के मेडिसिन के एक्शंस उसमें नहीं आएंगे. बट रादर देन नॉट हैविंग, उस टाइम पे टैबलेट्स दे दीजिए, ठीक है, और पेशेंट को नियर बाय हॉस्पिटल में शिफ्ट कर लीजिए. दीज मेडिकेशंस कैन बी केप्ट with us
in our car, maybe on two-wheeler, and घर के आपके फर्स्ट एड मेडिसिन बॉक्स में तो पक्का होना कीजिए. ही चाहिए. घर पे एल्डरलीज है तो पक्का ये कोशिश कीजिए कि आपका फर्स्ट एड बॉक्स रेडी है. सर जैसे मैंने हार्ट अटैक्स में सुना है कि पीपल ऑप्ट फॉर सीपीआर, तो व्हाट इज सीपीआर एंड अ नॉर्मल पर्सन जिसको मेडिकल ट्रेनिंग नहीं है सीपीआर की, वो भी सीपीआर कर सकता है? Right. So in a worst scenarios, if the patient is having a suffering with a heart attack, they might succumb, okay, and their heartbeats can stop. Okay. So in that situation, a procedure called as a CPR we do. It's a myth basically. For CPR, a medical degree is required or a medical professional is required. Okay. Even a layman with a simple basics and with a simple understanding of the situation can start this CPR procedure. Okay. So CPR is called as a cardiopulmonary resuscitation, where we are pumping the heart externally by giving chest compression on the patient's center of a heart effectively at good speed with fast compressions so that it can act as an outside pump. So in this situation, our brain cells, the vital organs, by giving good chest compressions, will get oxygenated blood with glucose, so the cells will not die till the heart is restarting or rebooting. So CPR can be given by any lay person. Okay. सर जब मुझे हार्ट अटैक किसी सामने वाले व्यक्ति को आता है या कोई डिफरेंट पर्सन को आता है, तो हाउ शुड आई गेट टू नो कि हाँ मुझे इस पर्सन को सीपीआर देनी है या इस पर्सन को नहीं देनी है? डू यूजुअली ऑल दी हार्ट अटैक पीपल शुड गेट अ सीपीआर? No, all heart attack patient doesn't require a CPR. Okay. But a cardiac arrest situation where the heart has completely stopped beating, in that situation CPR is required. Okay. So CPR, how to identify? Means how will I be knowing that this patient requires a CPR? So by doing a simple maneuvers, first thing we are tapping on the patient's shoulder. Are you okay? Are you okay? If a patient is not responding, okay, it means patient is not their senses. Okay, definitely. that is the first thing. Patient is not in senses. Second thing, by looking patient's breathing, okay, whether he's been breathing or breathing in or out. If he's not breathing, definitely he'll require. And the third thing, okay, once we start checking up pulses, for about a layman person or something, checking pulses could be difficult. But in the situation where he's not breathing, not having a pulse and not responding, you should call for help. And that help should be an expert, where the nearby ambulance can come at your home and they can start the CPR and they can identify the cause why the CPR is required. Maybe it could be a heart attack, it could be a neurological issues, it could be a different situations. Then the CPR can be effectively run. So sir, I get to know about heart attacks and stroke emergencies, but the major emergency is we see on roadside. That is our accidents. जो major emergency हमको वहाँ need होती है. But लोग क्या करते हैं in such emergencies, they just go there और फिल्म करते हैं, वहाँ पर शूटिंग करते हैं कि अच्छा ये एक्सीडेंट हुआ है. तो जब ये ऐसी इमरजेंसीज आती हैं, कोई रोड एक्सीडेंट होता है, ट्रॉमा होता है, तो what a person should do immediately on that time? Understood. So many times as India is a accident capital and we have a maximum mortality and deaths because of the road traffic accidents. Okay. So everyone, when the accident happens, tries to become a heroes. What they do by in accident situations, rather than filming or something, they try to pull the patient or victim outside of the vehicle. But what we are forgetting is because of maybe a accident issue or maybe a car having toppled down or something, they might have a spinal injuries. Okay. In that situation, if we try to pull that patient or something, because of the spinal injury, the paralysis can happen for the entire life of the patient. In that situation, rather than doing or helping, wait for the experienced professional doctor or a staff to reaching them, and then they evacuating. Apart from that or something, if you are in the middle of the road or something, maybe, and that time you can cordon off or you can have that safe zone where this treatment can be initiated. Apart from that, when you are calling a experienced ambulance services, try to resuscitate once the patient team or the paramedics reaches at the scenarios. And then definitely with the help of police and other services,
you can reach to a nearby hospital. What we have as a Indian law helps us and support us, which is called as a Good Samaritan law. What Okay. is Good Samaritan law basically? It means if any bystander is trying to help a victim in a trauma or accident situation, so in that situation, police or a hospital, they will not inquire that bystander about their private details, otherwise any information. Even Okay. they will not hold these bystanders to wait till the patient is been reviving or patient is start answering. So they can drop this patient by their own vehicles or with ambulance and they can leave. So Okay. the mortality can be reduced further. ओके, तो मतलब बेसिकली हम सेव कर सकते हैं जो पर्सन इज गोइंग थ्रू दैट एक्सीडेंट. Sure. सर, वी डू इन आवर हॉस्पिटल वी डू हैव 1066 नंबर एज एन इमरजेंसी नंबर, एंड या वी डू हैव एन 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस. तो व्हाट इज ऑल अबाउट कि 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस क्या है और 1066 इमरजेंसी नंबर क्या है? So in Apollo, we have 1066 helpline number. Okay. So any person from their mobile or telephone, they can ring 1066 in any type of emergency situations. So smart ambulance, or what we call as 5G enabled ambulance, this is basically is a hospital on wheels or a ICU on wheels, where a trained paramedic, nurses with ambulance, which is equipped with all ALS, means defibrillator, ventilator, ECG machine, oxygen, all equipped ICU equipped vehicle is reaching to the patient door. Okay. The moment paramedic is reaches, so they start assessing the patient's situation by taking their primary vitals, maybe heart rate हो गया, BP हो गया, sugars level हो गए, उनके सब चेक करने के बाद they reassess, and once they do, they can actively connect to the command center, which is in the hospital, where emergency medicine specialist can guide, they can visualize the patient, and they can advise the further treatment. Okay. So treatment is starting at the patient door. So without even reaching patient to the hospital, treatment we are starting. So the complexity or the criticality of patient can be looked after immediately, and we can run this test as early as possible. And if the same patient is suffering from a heart attack or a brain attack, we can ask our cath lab to be ready or operation theaters to be ready. The moment patient reaches to the hospital, we can directly take it to the concerned department. So this delay reduces, and the same 5G enabled ambulance does have GPS tracking and a visual tracking. So Okay. the communication is happening two-way, so patient is been hand-holded safely. Okay, मतलब बेसिकली एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर एम्बुलेंस, सो Right. दैट यहाँ पे साइड बाय साइड रेडी होता रहे हॉस्पिटल में कि जो भी चीजें हो रही Completely. हैं. और ट्रीटमेंट एम्बुलेंस में ही स्टार्ट हो सके. Oh, very nice. We have a मतलब very high level of thinking or techniques that you can use for to the save the particular life. Sure. So sir, अभी आपके एम्बुलेंस मतलब जो 5G एम्बुलेंस है या वॉट एवर एम्बुलेंस इज रीच टू दैट पर्सन जिसको सफरिंग है, उसके बाद वो एम्बुलेंस में पेशेंट आ चुका है और वो फाइनली हॉस्पिटल में आ गया, तो व्हाट्स द नेक्स्ट प्रोसीजर जो इसके बाद एम्बुलेंस में जो पेशेंट आया है उसके बाद हॉस्पिटल में आने का क्या प्रोसेस होगी? Okay. Once the patient reaches to the hospital, we do triaging, which we discussed earlier. So patient has been taken to a respective zones, maybe a red, yellow, green. So the treatment is starting, and the doctors, they are coming and they are doing the clinical assessment of the patient. So within next 5 minutes or something, the doctor knows what is a provisional diagnosis, what patient is suffering through. So according to that, he can run the investigations, a radiological imaging, and they can start definitive treatment. And very soon, in next 15 to 20 minutes, we start on working on a working diagnosis. So that is how we start to stabilize the patient, so the patient's vitals start to normalize. And once we do that, comes the role of disposal. So the patient who is coming to the emergency department, after giving stabilization the patient might go to ICU. Okay, they can be wheeled down to cath lab, where the heart attack or maybe a stroke patients, to remove a clot can be taken, or patient can be directly go to the operation theaters if there is a surgical emergency. Okay. And the patient who's treated well in the emergency department, their condition is improvising, and patient can be effectively discharged from the emergency department itself. Okay. So as an emergency medicine, it's a high pressure environment, and me being an emergency medicine specialist and leader in emergency medicine, my role
is to have effective pathways and process flow so that my entire team will work in a pressure situations. So by working and having these complex situations, the patient's treatment and patient's betterment and health condition improvises. ओके सो मतलब बेसिकली आप एक बार इमरजेंसी में पेशेंट आ जाता है तो ही गेट्स अ फुल ट्रीटमेंट कि उसको किस डिपार्टमेंट में जाना है और कैसे हम सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं इजीली और पेशेंट को हम सफरिंग से बचा सकते हैं. तो सर दिस इज अ वेरी इम्पैक्टफुल और इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन विथ यू. आई हैव मतलब मुझे सारे इमरजेंसीज के बारे में अभी यहाँ पे पता चला कि व्हाट कैन आई डू एंड व्हाट आई नो कि माई ऑडियंस ऑल्सो गेट टू नो कि कैसे किस इमरजेंसी में क्या चीज करनी चाहिए. सो सर जस्ट लास्ट क्वेश्चन, एक मैसेज जो हमारे ऑडियंस के लिए आप देना चाहते हैं सो दैट दे कैन लर्न अबाउट कि कैसे हम इमरजेंसीज में हैंडल कर सके सिचुएशंस को. टेक होम मैसेज अपन बात कर सकते हैं. इट्स अ मिथ कि अबाउट द मेडिकल डिग्री और अ मेडिकल प्रोफेशनल ओनली कैन सेव अ लाइफ. अ पर्सन हु इज, I would not say he needs the experience in working in a hospital, but who recognizes first the patient's situation, patient's symptoms, who act fast, who calls emergency department or an ambulance, smart ambulance in a good way. And in this situation, if the patient is having no pulse, no response, no breathing, to start CPR first. Okay. CPR everyone can do, okay? And CPR can be done by only hands-on technique. Continue, push hard, push fast. So next time in any situation, don't delay treatment because every second matters. Thank you. Thank you so much, sir. It was a very insightful conversation with you. Hope to see you soon. Thank you.